what can we do about these feelings? The feelings, because see, it's not that this is just the only problem. There are in a family, day-to-day ups and downs happen. There are new things happening, and especially if you see in the last 6 months, a lot of ups and downs have happened in various areas of your life. So the best is to talk to somebody in your family who you can share your secret with, or whatever your life, whatever your thoughts are. Discuss it, both sides, whether it's the person who has diabetes or it's the spouse or the family or parents or whatever. So whatever are the feelings, they should be discussed. A plan should be made. The doctor would have obviously seen the person and said certain guidelines, what would be the parameters that would be required, that the blood sugar should be well controlled. If there's blood pressure, that should be well controlled. If the person is overweight, then the weight loss is recommended. Activity level, lifestyle changes. So that is where the family can support. They can support by, like suppose if the person has been told to avoid anything sweet or avoid high calorie foods. So those things, because usually diabetes is something which runs in the families. So if it is told for one person to stop, then even the other people can stop. It's not that one person is to have a very basic diet and no sweets and no fried and nothing like that, and similarly the rest of the family is feasting on the other side of the table. तो आपके कहने का मतलब है कि जो मरीज होते हैं उनको अपने फैमिली के साथ जो खाना बना है वही खाना चाहिए. Yes. और और सब फैमिली को एक साथ खाना चाहिए, जिससे कि जो अभी नया पेशेंट है उसको ऐसा लेफ्ट आउट नहीं लगे, उसको नहीं लगे कि उसकी लाइफ में अब कुछ बचा नहीं है और वो और कुछ कर नहीं पाएगा. इस तरह की उसकी भावना नहीं होनी चाहिए. तो फैमिली का जो रोल जैसे आप बता रहे हैं, वो फैमिली का रोल ये है कि उसको सपोर्ट करना चाहिए और खाना वगैरह सही टाइम पे या उसके साथ ही खा लेना चाहिए. एंड बिहेवियर में कुछ चेंज अगर है और तो उसको कॉम्प्लीमेंट भी करना चाहिए टाइम टू टाइम. इवन अगर एक्सरसाइज है, अगर जैसे इफ द पर्सन हैज टू वॉक एवरी डे, सो इंस्टेड ऑफ जस्ट सेइंग दैट ओके गेट अप इन द मॉर्निंग एंड गो फॉर अ वॉक, somebody from the family can also go along with them, say yes, that okay they can go for a walk together, because acha hai if both if 2 people or 3 people go together for a walk, it is very supportive to the person who is already struggling with so many things. It is very nice if if the whole family is going for exercise together, if they are controlling their diet together. अभी काफ़ी फैमिलीज में ऐसे भी देखा जाता है कि अगर कोई वॉक करने जाता है तो लोग बाग समझते हैं वो बीमार है या उसको कुछ तकलीफ है इसलिए वॉक करने जा रहा है. तो ऐसा नहीं है. आपको सबकी लाइफ में डेली वॉक करना ज़रूरी है, और ये आपके लिए एक अच्छा मौका है कि आप अपने फैमिली मेम्बर के साथ भी वॉक करने जा सकते हैं, उसको सपोर्ट कर सकते हैं. इसमें दोनों को फ़ायदा है. और एक ख़ास बात ये भी रखनी चाहिए कि डू नॉट नैग. आप उसके साथ बार बार हर चीज़ में उसको रोके टोके नहीं, हर खाने के अंदर जाके उसको नाप तोल नहीं करें, और उसको जितनी बार आप टोकते हैं आप उसको रियलाइज़ कराते हैं कि वो एक किसी बीमारी से परेशान है या वो ग्रसित है. तो ये थोड़ा अवॉइड करना चाहिए. Especially sometimes if food is being cooked for everybody and only this person is given karela ka sabji and the rest other people are having very nice, very which technically looks very pretty but nutritionally may not be very good. But the thing is that anybody would get tempted, because the visual appeal of food is such that it can tempt. So instead of helping, you should not tempt the person who has diabetes. तो एक तो आप उसे हेल्प भी करिए, दूसरा आप उसको टेम्प्ट मत करिए, उसको ये दाव पे मत लगाइए कि हम ये खा रहे हैं और तुम्हें ये नहीं मिल रहा है और ये तुम्हारे लिए खराब है या अच्छा है. तो एक उस बात का फैमिली को बहुत ध्यान रखना चाहिए. तो उस मामले में फैमिली भी काफ़ी सपोर्टिव होती है और वो काफ़ी रोल अदा करती है उसको स्वस्थ रखने में. Similarly, if you're checking the blood sugar regularly and if the blood sugars have come within the good range that it is supposed to, then you should appreciate it. Say, okay, today maybe we'll do something special. Maybe
either watch a movie or we'll go out somewhere, or you know, जो भी आपके whatever is situation में rather संभव है, rather than giving a food reward, you can give any other reward. That okay, maybe you have lost X number of kilos, so today maybe we can buy a new garment, a new dress, or a new shirt, whatever it might be, you know. So some small rewards are also nice along the way. So because this keeps हम सब human being है और हम सबको भी this अच्छा helps लगता है to you know keep the person's spirits a little in a good shape, and they feel motivated to continue to do what they are doing. And because a lot of times if there are people who are overweight by many kilos, the journey can be very long. Because the weight loss, the weight gain did not occur in one day, so the weight loss will also take a few years to happen. So any small rewards which are there should be given, such that the person feels happy to be adopting these lifestyle changes, whatever they might be. इसके अलावा और क्या उनकी फीलिंग्स हो सकती हैं जिसको नोटिस किया जा सकता है? क्या होता है कि जिस तरह से फैमिली में किसी को डायबिटीज़ होती है तो उसकी फीलिंग्स भी होती हैं, तो हमें उसकी फीलिंग्स पे भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए जिससे कि फैमिली मेम्बर उसको हैंडल कर सकें. Yes, definitely. और जैसे डिनाइल हो गया तो बहुत सारे लोग तो ये मान के चलते हैं कि अभी उनको डायबिटीज़ हो गया, अब उनको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ अपने आप होता रहेगा, तो वो नहीं होना चाहिए. और अगर एंगर है उनका एक फीलिंग्स, तो उसके ऊपर भी उन्हें ध्यान रखने का है और किसी के साथ बात करके उस दुख को वेंट आउट करने का है. Anger is not something which is going to help anybody who has diabetes. In fact, the anger will further increase the hormones which are working to elevate the blood sugars. They work against the insulin. So sometimes even just being temperamental and losing your temper on for any non-specific reason also can further cause fluctuations in the blood sugar levels, which are not good. और वो बहुत ज़्यादा टाइम तक एंग्री रहते हैं तो वो डिप्रेशन में भी जा सकते हैं. So ideally you can talk with whoever, the family or friends or somebody who you want to, and if that is not possible, you can even journal. You can sit and write in your book whatever your feelings are, so that at least while you are doing this, you can feel a little better. You tend to accept it more easily because you see it with a different point of view, and you are able to feel more comfortable. Because see, once diabetes is there, it is going to remain. It's just how you live with it and how you accept the kind of life, and how close to your targets you keep your blood sugar levels. That is what determines what your future life will be. The key feature here और इसकी जो सॉल्यूशन है इस सिचुएशन की, जो कोपिंग अप विद डायबिटीज़ है, जब डायबिटीज़ शुरू का हुआ ही है, तो उसके अंदर जो समझने वाली बात है वो ये है कि एक्सेप्टेंस. जैसे ही आप उसको एक्सेप्ट करते हैं तो आपको एक नया रास्ता दिखने लगता है, और जब तक आप उसको रेजिस्ट करते रहते हैं वो आपके सिस्टम में परसिस्ट करता रहेगा. आप जैसे ही एक्सेप्ट करेंगे आपके लिए बहुत सारे नए रास्ते खुल जाएंगे, और अक्सर सारे ही लोग धीरे धीरे उसको एडजस्ट कर लेते हैं एक्सेप्ट करते ही, और वो एक अच्छे कंट्रोल की रास्ते पे या एक बेटर कंट्रोल के रास्ते पे आ जाते हैं. Yes, definitely. Because if the acceptance is good, then the control is also better, because then you are more careful about what you are eating, how much calories are you consuming, how much are you walking, how much stress are you taking, are you able to do some stress relieving activities like yoga, like meditation, pranayams, all these things, or like I said earlier, journaling. So these are things which, because stress is going to be there, the day-to-day stress and strains of life are going to be there. They are not going to go away. Yes. It's just how you are able to cope with these things, And which will make it family better. also makes sometimes like one person is diabetic and 5 people are in the family, so everyone becomes doctor for that person. Yes, and true. Everyone starts giving advice, and everyone wants to see on the glucometer how much sugar is there, and then they start guiding. तो वो सब नहीं होना चाहिए. घर में 1 या 2 लोगों को ही उसको सपोर्ट करना चाहिए, कंट्रोल नहीं करना चाहिए.
जहाँ जहाँ आप उसको कंट्रोल, चेंज, फिक्स या मॉडिफाई करने की कोशिश करेंगे वो उतना ही आपके हाथ से फिसलता जाएगा और उतना आपके अगेंस्ट हो जाएगा, क्योंकि अब वो जान गया है कि आप उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आप उसको रोक रहे हैं। उसके अलावा अगर आप उसको भी जिस तरह से वो पेशेंट अपने आप में शुगर को एक्सेप्ट कर रहा है, उसी तरह रिलेटिव्स और फ्रेंड्स को भी उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। तो जैसे ही एक्सेप्टेंस आएगी तो आपका रेजिस्टेंस रिजॉल्व हो जाएगा, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा और आप उसके ऊपर कंट्रोल पा सकते हैं। Yes, definitely. The support of family makes a difference, a lot of difference. But at the same time, if the family members try to overpower, like say that, okay, now you're going to be your timetable. You have to get up at this time. You have to exercise at this time. This is how much you have to eat. This is how much you don't have to eat. This is the time you have to sleep. This becomes sometimes too regimental for the person, which might further make them angry and want to cheat and encourage those kind of behaviors. So basically it is good if the person themselves can take responsibility for their blood sugar control, for their lifestyle changes, rather than somebody who is controlling. And then if suppose they are not doing the same thing, then they become very negative. You see how I told you that you have to get up at 7 o'clock in the morning or 6 o'clock, whatever the time may be. You are not doing it, you are not fit for. So all this negative kind of dialogue is not required. It instead of motivating, it demotivates the person. तो आपके कहने का मतलब ये हुआ कि उसके ऊपर सडन टाइट अपना शिकंजा आप उसके ऊपर टाइट मत कर दीजिए, एकदम ही उसको ठीक करने की कोशिश न करें और उसको सपोर्ट करें। जैसे खाने के लिए तो सुबह दोपहर शाम ही करेले की सब्जी और भी 2-4 कड़वी चीज़ें बना के देने का, और या फिर उसको बार बार प्रेरित करने का कि तुम ये नहीं खा सकते, तुम वो नहीं कर सकते। मतलब उसको छोटा मत बनाइए, उस इंसान को आप उसको मीन मत करिए, उसको छोटा मत बनाइए और वो उसको बाहर निकालने के लिए उसको सपोर्ट करिए कि वीकली वंस इन अ वाइल ऑल्सो दैट काइंड ऑफ फूड इज़ ओके एंड पोर्शन कैन बी रिड्यूस्ड। जो भी आपका फैमिली का स्टेपल डाइट है वो उसमें से थोड़ा पोर्शन कम कर सकते हैं रादर देन चेंजिंग द कंप्लीट डाइट। सो वो नहीं करना चाहिए। एक्सरसाइज के मामले में जैसे उसको सुबह 4 बजे उठा के आप दौड़ने के लिए बोलेंगे तो वो नहीं करेगा, उसके शरीर में वैसे ही प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो थका हुआ है और वो नहीं कर पाएगा और उससे वो और नेगेटिव थॉट्स में चला जाएगा। उसको एक फेलियर दिखेगा कि आई एम ए फेलियर, आई कैन नॉट डू दिस, आई कैन नॉट डू दैट। तो वो नहीं करके उसको 10 मिनट ही चलने की एडवाइस दीजिए दिन में 3 बार। और साथ साथ में अगर आप देखेंगे कि डाइट हो गई, एक्सरसाइज हो गया, मेडिकेशन हो सकती है, तो मेडिकेशन पे भी थोड़ा थोड़ा कंट्रोल और स्लोली चालू करना चाहिए। इट्स नॉट वेरी अर्जेंट कि आप तुरंत पूरे स्पीड से उसको ट्रीट करें, स्लो भी कर सकते हैं। तो इस तरह से फैमिली उसको सपोर्ट कर सकती है, फैमिली उसको एक्सेप्ट कर सकती है और इस प्रॉब्लम also like medicine. Sometimes if the person forgets to take the medicine, somebody in the family can tell them that, remind them, not force it down कि oh you have to take it now. The person themselves should remember that they have to take their blood sugar tablets. They have to take their blood sugar testing also if is required. So that should be done by the person themselves rather than the family. Somebody is just forcing that, listen, you have to do this and you have to do that. Those kind of things are very difficult. But if I think a person has family support, and plus of course if they themselves are diligent enough to look after the diet as well as the exercise and follow whatever instructions are given by the doctor, I think they live a much better quality of life than any other. तो मुझे लगता है कि आज के इस प्रोग्राम में आप सबको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। और ये एक बहुत अत्यंत आवश्यक पॉइंट है, कोपिंग विद डायबिटीज़, जिसमें आप अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ कैसे उसका बिहेवियर और कैसे उसको सपोर्ट करेंगे, इस बारे में आज हमने ख़ास बात की है। और आप दूसरे पेशेंट और दूसरे लोगों की भी इससे मदद कर सकते हैं। तो फैमिली का बहुत बड़ा रोल होता है। और इसी के साथ हम आपसे विदा लेंगे।